Hello everyone, welcome to another episode of Startup Digital Talk Show. I am your host Prajakta, and with me I have my colleague Shankar, who is the uh, with me I have Shankar Kumar and Saurav Kumar. Before we start the episode, can you let me know that how podcast helps in brand growth and what are its benefits? See, nowadays the time is different, and gone are the days when text content and blogs used to be very much helpful. Nowadays, what happens? The user or the audience prefers to engage with the brands and businesses in a visual way, or you can say more interactive way. And podcasts are one of the most important segment nowadays, which helps in brand growth for any businesses. So, when we talk about how podcasts help in brand growth and what benefits it's provide, in a simple way, we can say that it helps you create a community, a way to reach your audience, and create a connection with your audience, which in turn helps you build a strong brand presence. And using a podcast, you can tell your brand story. You can tell the whole idea about your business or what you're trying to do. That is one benefit. Other benefit is when you are creating a podcast, it can be easily shared across various platforms. Like you can use it on your blog, you can publish it on YouTube, you can share it on social media, and using your podcast, you can create multiple tiny content pieces, okay, which in turns helps you in reaching out to more audience. So this is another way that helps in growth for your brand. And other thing is, for example, it is better to explain through an example. Suppose you are a lifestyle coach, okay, or you are a fitness coach. In that case, if you are trying to build an audience, if you are trying to sell your services, you can create a community of people who need your services. You can share tips, you can share everyday activities that they can do in order to achieve that wellness. So that way, if you are able to create a community, you'll be able to sell your services or you'll be able to amplify your brand's presence. So there are different segments where it can be helpful, but this is the basic. Okay, so as you said, podcast helps in brand growth, but how do I pick a good topic for my podcast that my listeners will like and they'll stay engaged? It's very simple. The answer is you can say the basic of identifying topics. So go for the trending topics, go for what users are trying to search, or there are different keywords or different topics for any specific industry segment. Or if you are into a specific niche, try to find what is most commonly searched keywords or what is the most recent happenings in that particular segment and go for it. So one is the trending topic. Second is it should resonate the requirement of your audience. Like if I'm talking about if I'm a you can say legal consultant and I'm providing services to startups or legal support to startups, we can talk about any certain regulations or certain changes in the rules and acts from the government and what it impacts how it impacts the business. So that is one way. That is just one example that I'm throwing randomly. There might be several other examples, but the key is recency and relevance. That's the key to find a good topic. Yeah. So once I get to know a topic that is suitable for me, but then what kind of equipment and setup do I need to start a podcast, and do I have to spend a lot of money on it? Well, that depends because if you want to have a successful podcast, then there are different requirements for them, and the production quality is one of them. So Hmm. the quality of your content or the quality of if you are having an audio podcast, the audio needs to be
crystal clear, and to achieve that, you need to have good equipments like a good mic or a good setup for that. But I believe in don't go for quality in the beginning. The quality should be appropriate so that audience can listen properly. If it's a video podcast, you should invest in a good camera so that you're properly visible and your video quality is good. But right in the beginning, it's not important to have best equipment in the industry. Start with something which is good enough to provide good content or good production quality. Once you have it, once you start getting traction, once you have a loyal community, then invest, because the more you invest, the more you increase the quality of your podcast, the more audience you will attract. Okay, got it. So, Saurav, you manage the complete end-to-end podcast process for Startup Pulse, right? And many other Yep. clients as well. So, can you share an overview of the whole process so that if any beginner is starting, how they should proceed? Okay. So to answer this question, I would like to share my screen. Okay. Let me share it. So is my screen visible now? Not Not yet. yet. Yes. Yeah. Okay. So first of all, you have to do the setup for your podcast and how you'll publish all the recordings and all the videos. You have to set up all those things. So first of all, you can create YouTube channel. In the beginning, I would suggest that create one channel for full podcast and one for short clips in the beginnings. Later on, you can combine the both. And also create a Instagram page and optimize that so that you can publish all the short clips that you will produce from the long video of the podcast. And also you will reach out to guests and the people who you want in your podcast. So you have to keep all the messagings ready, that how you will approach them, what will be your following messages. So you have to be ready with that as well. And after that, you have to optimize your LinkedIn, and you have to reach out to right set of people who have the expertise in the niche that you are targeting. So you have to focus on that as well. And then you have to set up the Calendly and Google Calendar so that you can uh, book the time slots. You can block the time slots for you and the guest as well, so that they will get emails when uh, like the podcast is scheduled and nothing will be missed. So you have to set up all these platforms before you begin. And also the gears are important. And also one thing you can do in the beginning, that is record your intro and a outro with call to action, so that whenever the videos are ready and the short clips are ready for publishing, in the video edit portion, you can just add those intro and outro easily and publish that. So first, if you ready all these things, it will be easy for you after the podcast is recorded. And then let's talk about the content strategy. First, we have to invite those guests, those person who are popular in that niche or who are in trend. For example, if you are doing podcast with doctors, so you have to see that the other podcasters are inviting which doctors, or which doctors are engaging in the podcast. So you have to invite them. And also who have the knowledge that can add value to your audience, you have to invite those persons. Okay, because after all, podcast is something that you use for growth, but this growth is completely depends upon the wisdom and the knowledge and fame of your guest, because that helps you to grow your podcast, and they helps you, okay, to build your credibility and trust among your audience. Then also track all your competitors for podcast ideas.
because many times you may think that you may run out of ideas, but if you track your competitors, ideas will be available every time. Okay. And after that, also track content ideas that can attract eyes. Okay, you have to track that which podcast of competitors are doing good and what are their format. So you have to track everything, and then you can implement the same in your podcast too. Also, let's talk about the podcast process, that how it will be done. So first you have to do the networking part with the right set of people, right set of guests, uh, right people with expertise in your niche. So you have to do the networking. You can do that offline or online on LinkedIn. Then you have to schedule the podcast. You have to block the time slots, and then after the scheduling that you do using Calendly, then you send the calendar invite, Google Calendar, and then prepare the topics and questions that you will discuss in the podcast and share that with your guest as well. That will help to streamline the podcast in a better way. And then if you're doing online, I'll suggest the platform riverside.fm, because that has the recording capability of recording your podcast in guest computer. Okay, and when the podcast is over, it will be uploaded in the platform, so you will get the best quality output after the recording is done. So you can use riverside.fm for online recording, and if you're doing offline recording, then you have to use the setup that you have created in your room or in your studio, wherever. And when the podcast is recorded, then you have to process every recording to for video edits, and then you have to create the thumbnails so that you can whenever you will upload them on YouTube or Instagram Reels or YouTube Shorts, your thumbnails will be ready, your video will be ready, and also you have to ready your title, description, tags, captions, and hashtags for Instagram. Okay, so you have to ready all these things, then you can publish on every social media you want. I've just mentioned few that is more common for podcast clips upload. Okay, so when you have done with the publishing part, then you have to track few things. Like you have to analyze each content, each clips on each platform, how they are performing, which type of podcast are doing great for you. Okay, which clips are getting more views. Okay, then also you have to re-optimize maybe the edits, maybe the publishing process, maybe the schedule in which you publish those videos. Okay, you have to re-optimize based on whatever data you are getting after publishing few of the initial podcast clips. Then you have to modify the content strategy as well, because in starting nobody is perfect, and after a few podcasts you will know yourself that which content are doing good, which content are not doing not getting any result for you. And after tracking everything, you can modify your strategy. So that's the whole process. That's how the whole process looks like when you are managing any podcast. So yeah, that's all from me. Okay, great. So, as you explained about how to start the podcast, the content strategy, and everything. So, but do I need a team to start the podcast, or can I do all these things on my own? Okay, so this depends upon how much time you can allocate for it, and do you have the capabilities and the skills to do everything by yourself. Because you have to, if you want to do it yourself, then you have to know about how to do video editing, how to publish in each platform, how to publish in a better way. For example, many people don't know that how to put thumbnails in YouTube Shorts. Okay, because if you are using YouTube desktop mode, then there is no option available for thumbnails for the short clips. But if you are using mobile to upload those shorts, you have that option to set thumbnails in your shorts as well. So if you know all these things about the social medias, how they work, their algorithms, and how you can optimize every bit of content, and you can do the editing by yourself, then yeah, you can do it yourself. But if you don't
know these things, and but you want to scale up fast, then you must need a team, or you can outsource it for the podcast process. Yes, and also at the initial stage, I think we can do it on our own. And once the podcast grows, then we can, have a team, right? Yes, it is always better to know everything by yourself, so that if you have the team as well, then you will know that how much time it can take, how much uh, time you have to allocate for each team member, and how it can be processed. Because once you know the whole process, you can manage it better. Yes. And Shankar, would you like to add anything? There is one thing that Saurabh said which is very important. He said that the format of the podcast is very important. For example, a podcast can be a solo podcast. Like if you are a solopreneur, uh, you can talk about what your expertise is and how you can help people or related topics. So it can be solo podcast. It can be a podcast in interview format because nowadays, if you are listening podcast on YouTube or on Spotify or on Podbean or any platform, interviews are very important. Okay, so that is one thing which you can choose. There are other ways of podcast like roundtable discussions where you can invite guests, you can invite multiple thought leaders on any specific topic, and you can debate on whatever your topic is. So the rate formatting is very important because if you want to run a successful podcast or if you want to uh, get the maximum benefit out of a podcast, you need to choose the correct format. That is one. And second thing, again, sort of pointed out that about the selection of the guest. If you are doing it in an interview format or a roundtable discussion, so selection of guest is very important. Here we are talking about using podcasts for brand growth. So the key is brand growth. So our topics as well as the guest selection, if we are going for roundtable discussions or interview format. So guests and their expertise should be relevant to the topic that you are addressing, or they must be, you can say, complementing your skills and your expertise, which helps in helping your brand to grow or to get more listeners or more audience. Sometimes we also go for association with other brands. If I am a fitness consultant or if I'm a fitness expert, I can invite some nutrition expert on my podcast because I can guide them on what kind of exercises you can do to get fit. At the same time, a nutrition expert can explain that what kind of diet you should follow. So it's kind of, you can say, supplementing the requirement or supplementing the skills. So again, the guest selection is another important thing because if we adopt all these things, there is no way a podcast can be successful or it can't help uh, a brand to grow and create a loyal community. Okay. So, as you said, the format of the podcast is very important, like roundtable or interview. But how do I keep my listeners engaged? And do you have any tips of making my podcast stand out? Yeah, see, like standing out, actually, we just received mm, recommendation, you can say a request from one of the audience. Uh, is asking for, use Hindi for followers and speakers from Bihar and UP so that they can also understand what we are talking. So, yeah, किसी भी पॉडकास्ट को पॉपुलर करने के लिए या स्टैंड आउट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्या कि जो हम टॉपिक उसमें ले रहे हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो मास इंटरेस्ट का हो। क्योंकि जो हमारा गोल है, वो गोल है कम्युनिटी क्रिएट करना। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, ऑल्दो ये पॉडकास्ट से रिलेटेड नहीं है, ये कम्युनिटी बिल्डिंग से रिलेटेड है। We all know about, Patanjali Ayurveda and Baba Ramdev. Okay.
I think that is one of the best case studies in creating a brand and creating a community of loyal audience. So what he did, he started with yoga. He was not selling any product. He started with yoga. He built a community of loyal audience, and then once he had audience, then he launched his products. And, he also started his Patanjali Ayurved, a medical college or something in Haridwar. तो दैट इज वन वे। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, अभी हमने जब बात की ऑडियंस फ्रॉम यूपी एंड बिहार, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है जो कि बिहार से आता है। हम लोग उसको बोलते हैं फॉक्स नट और हिंदी में बोलते हैं मखाना। ये एक सुपर फूड कहलाता है। जैसे आज की डेट में एवरीवन इज हेल्थ कॉन्शियस, दे आर लुकिंग फॉर थिंग्स जो उनको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करे और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हो। तो अगर हम एक एक्सपोर्टर है या आई एम ट्राइंग टू जो जो फॉक्सनट है उसको बिहार से उठा के पूरी दुनिया तक हमको पहुंचाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऐसा कम्युनिटी क्रिएट करना पड़ेगा, या उस जो ऑलरेडी कम्युनिटी है, जो हेल्थ कॉन्शियस कम्युनिटी है, उसको पेनिट्रेट करना पड़ेगा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इसका क्या बेनिफिट्स है, ठीक है। और जब हमारे पास ऑलरेडी एक कम्युनिटी है, देन वी कैन स्टार्ट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। वैसे ही अभी तो बहुत पॉपुलर हो गया हर जगह बहुत सारी चीजें हेल्थ ड्रिंक्स के नाम पे। देयर आर सो मेनी स्टार्टअप्स फ्रॉम बिहार जो कि एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे सत्तू, देयर इज वन थिंग जो हम लोग पहले हर जगह अवेलेबल नहीं होता था इंडिया में। मतलब मैंने देखा है, मैं इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में रहा हूँ और बहुत मुश्किल होती थी सत्तू फाइंड करने में। एंड आज के डेट में क्या है कि ई कॉमर्स के थ्रू कहीं भी आप सेल कर सकते हो, ठीक है। तो जो स्टार्टअप्स हैं बिहार में जो इस तरह के प्रोडक्ट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो भी एक ऐसा कम्युनिटी बिल्ड करें, क्योंकि बिहार और यूपी के लोग तो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, ठीक है। तो उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड हर जगह है, बस उन्हें वहां तक पहुंचने की जरूरत है। और पॉडकास्ट हो गया या कम्युनिटी बिल्डिंग हो गई, अगर इसको करते हैं तो इट विल help in promoting the business and increasing the brand presence. ओके। तो जैसे आपने एग्जांपल दिया बाबा रामदेव ने, जैसे उन्होंने योगा से स्टार्ट किया और फिर अपने प्रोडक्ट्स सेल करना स्टार्ट किया पतंजलि के। तो जो स्टार्टअप बिजनेस ओनर्स है, तो वो लोग अगर पॉडकास्ट स्टार्ट करेंगे तो वो सक्सेसफुल पॉडकास्ट कैसे कर सकते हैं उसको? अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ जो की एलिमेंट्स है मैं उसकी बात करता हूँ। जो सबसे पहला एलिमेंट है, इट्स नॉट जस्ट फॉर पॉडकास्ट, इट्स एनी काइंड ऑफ प्रमोशन और एनी काइंड ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि कंसिस्टेंसी, ठीक है। अगर हम एक पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। हमें एक डिफाइंड इंटरवल पे पॉडकास्ट रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने एक एपिसोड किया, हो सकता है कि उसमें 10 लोग एंगेज हुए हों, 10 लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आया, ठीक है। तो वो 10 लोग जो होंगे वो 10 और लोगों को बताएंगे कि हाँ ऐसा ऐसा मैंने देखा था, ये बहुत अच्छा था और उनको भी सुनना चाहिए, ठीक है। तो उस जो वो जो 10 ऑडियंस है, जो हमारे लॉयल ऑडियंस बन चुके हैं एक एपिसोड में, वो हमारे अगले एपिसोड का रिपीट करें। और अगर हमारा अगला एपिसोड 1 महीने तक आता ही नहीं है, 2 महीने तक आता ही नहीं है, तो फिर वो कंटिन्यूटी नहीं रह जाएगी। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। ऑल्दो ये पॉडकास्ट नहीं है, ये एक यूट्यूबर का एग्जांपल है। मुझे ट्रैवल रिलेटेड यूट्यूबर्स में बहुत इंटरेस्ट है। तो एक बहुत ही फेमस कपल है फ्रॉम मनाली, रोनी एंड बार्टी। मैं उनका हर यूट्यूब एपिसोड, उनका हर वीडियो रेगुलर देखता हूँ और एक डिफाइंड इंटरवल पे आता भी था उनका एपिसोड। लेकिन इधर काफी टाइम से उनका एपिसोड जो रेगुलर नहीं रहा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि उनके बहुत सारे एपिसोड्स आए भी हैं, मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि मैं बार बार जाके देखता था कि उनका एपिसोड आया कि नहीं आया, और जब नहीं आया तो बार बार देखना मैंने बंद कर दिया, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कंसिस्टेंसी है तो दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग जो कि सौरभ ने भी अपने ये में बोला था कि क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपने ये पूछा था कि किस तरह का इक्विपमेंट चाहिए, किस तरह का सेटअप चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, हमारा बहुत अच्छा सेटअप नहीं हो सकता है बिगिनिंग में, अगर हमारे पास बजट नहीं है तो इन्वेस्ट करने के लिए, बट
क्वालिटी जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो होनी ही चाहिए। क्योंकि अगर हमें प्रोफेशनल ब्रांड बिल्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो बिना इन्वेस्टमेंट का तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और तीसरी चीज आपने पहले ही बोला था कि क्या टॉपिक चूज करें, ठीक है। तो कंटेंट इज किंग, वो किसी भी सेगमेंट में सही है, चाहे हम किसी भी तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो कंटेंट हमारा ऐसा होना चाहिए जो हमारे ऑडियंस को एजुकेट करे या एंटरटेन करे या उनको इंस्पायर करे, ठीक है। तो वो हमें हेल्प करेगा। और एक जो दो और चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला है क्या कि देयर इज नथिंग लाइक ओवर सेलिंग, ठीक है। तो प्रमोट प्रमोट प्रमोट, अगर हमने एक पॉडकास्ट स्टार्ट किया है तो हम उस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए जितना प्रमोशन कर सकते हैं, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू ईमेल, या जो ऑनलाइन कम्युनिटीज हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटीज है, लिंक्डइन ग्रुप्स है, फेसबुक ग्रुप्स है, हमें हर पॉसिबल जो अपॉर्चुनिटी प्रमोशन का उसको यूटिलाइज करना। और एक जो लास्ट मेरा ये होगा कि एंगेजमेंट बहुत जरूरी है। हमारा ऑडियंस है, हम उन्होंने हमारे पॉडकास्ट पे कमेंट किया या कोई सवाल किया, और हम अगर उसका वो नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, अगर उनसे एंगेज नहीं कर रहे, ठीक है, तो उनका इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होगा। और एक ये है कि अगर हमने किसी ऑडियंस के कमेंट का रिप्लाई किया तो दे फील डिलाइटेड कि हाँ भाई मेरा मेरा रिप्लाई किया है इसने, ठीक है। तो देखते हैं लोग किसी सेलिब्रिटी को या किसी के ट्वीट को अगर ये करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, उनका रिप्लाई आता है तो वी शेयर इट, वी रीट्वीट इट, क्या भाई सच एंड सच पर्सन ने मुझे रीट्वीट किया है, मेरे ट्वीट का रिप्लाई किया, ठीक है। अब नरेंद्र मोदी किसी को फॉलो कर देते हैं तो उसने वो तो पूरा तूफान मचाया था कि हमें मोदी ने फॉलो किया, ठीक है। तो दैट इज द लास्ट थिंग कि एंगेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे हम दो पॉइंट और ऐड करना चाहेंगे। जैसे कि शंकर ने कहा कि कम्युनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंटेंट इज द किंग। तो इन दोनों चीज़ों को ज्वाइन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ऑलरेडी एक अच्छा कम्युनिटी है, फॉर एग्जांपल आप फिटनेस इन्फ्लुएंसर है और आप स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर आप कोई फिटनेस ब्रांड है, ठीक है, और आपके पास जो कम्युनिटी है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप किन लोगों को एज ए गेस्ट चाहते हैं, और क्या आपका क्वेश्चंस रहेगा जो कि आप चाहते हैं कि हम पॉडकास्ट में पूछे। तो वहीं से आपको बहुत सारा कंटेंट पीसेस मिल जाएगा जो कि मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि जब भी आपके पास कोई भी गेस्ट आया है, तो क्या क्वेश्चंस आप उनसे पूछ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा कि आपका कंटेंट क्या निकल के आएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो है पॉडकास्ट में बहुत ही मतलब यूज़फुल आइडियाज़ देते हैं, बहुत ही यूज़फुल नॉलेज शेयर करते हैं, लेकिन वो आपको पूछना भी उस तरीके से पड़ेगा कि वो नॉलेज एक्सट्रैक्ट हो पाए, ठीक है? तो वो एक चीज़ है जो कंटेंट आपको बेहतर बना सकता है। और एक चीज़ है कि पॉडकास्ट में जैसे कि मैंने कहा कि आप खुद का ऑडियंस बिल्ड करने के लिए आप अपना गेस्ट का नॉलेज यूज़ करते हैं और उसका फेम को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आप एक स्टार्ट कर रहे हैं फिटनेस का ब्रांड, ठीक है? और आप मान लीजिए फिटनेस प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो अगर आपको ये चाहिए कि आपका प्रोडक्ट का सेल हो, आपका पॉडकास्ट का ऑडियंस बढ़े, आपका कम्युनिटी बिल्ड हो, तो आपको ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर को अपने पॉडकास्ट में लाना पड़ेगा, या फिर अपने आप को उस पॉडकास्ट में लेके जाना पड़ेगा जो कि कोई इन्फ्लुएंसर है। क्योंकि ऑलरेडी उसके पास मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, और जो जब वो लोग आपको देखेंगे, ठीक है, और वो लोग आपको इसलिए नहीं देखेंगे कि आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो लोग आपको इसलिए देखेंगे क्योंकि आपके पॉडकास्ट में कोई एक फेमस पर्सन है जो कि उस इंडस्ट्री में इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप दूसरों का ऑडियंस को यूज करके अपना ब्रांड प्रमोशन, अपना ग्रोथ क्रिएट करते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत ही अच्छा सवाल ऑडियंस में से आया है। नंदिता तिवारी सी इज आस्किंग कि व्हाट आर द कॉमन चैलेंजेस ब्रांड फेस व्हेन स्टार्टिंग अ पॉडकास्ट एंड हाउ कैन दे ओवरकम। तो ऑलरेडी हमने इसका कुछ एलिमेंट्स को डिस्कस किया है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंजेस मेरे हिसाब से है उसमें एक है क्या कि हम जब भी कुछ स्टार्ट करते हैं तो वी इमीडिएटली एक्सपेक्ट ड्रास्टिक रिजल्ट्स, कि हमने एक पॉडकास्ट स्टार्ट किया, हमारे पॉडकास्ट का व्यू तो मिलियंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो पहली चीज ये है कि जो पहला चैलेंज होता है किसी भी ब्रांड के लिए कि दे वांट इमीडिएट, ठीक है। और कोई स्टार्टअप है अगर, तो उनके पास टाइम नहीं है वेट करने का, क्योंकि उनको ट्रैक्शन दिखाना होता है अगली फंडिंग के लिए या
अगर उनके उनके पास फंडिंग नहीं है, बूटस्ट्रैप है, तो उनको सीड फंडिंग के लिए उनको चाहिए होता है कि हमें ट्रैक्शन दिखे कि यहाँ पे हमारे इतने लिसनर्स हैं या इतने सब्सक्राइबर्स हैं। दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग क्या है कि जो अभी सौरभ ने कहा, एसोसिएशन वाली बात। अगर हम एक नया ब्रांड है, तो कोई वैसा इन्फ्लुएंसर जिसका मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, वो हमारे साथ क्यों एसोसिएट करेगा? वो नहीं एसोसिएट। ठीक है, तो ये दूसरा चैलेंज है। इसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं? पहले मैं पहले चैलेंज की बात करूं कि जो रीच की बात है कि हमारे सब्सक्राइबर बेस या व्यूज या ये कितने टाइम हमारा पॉडकास्ट सुना गया, वो चैलेंज कैसे है? उसके लिए जैसे मैंने पहले ही कहा कि प्रमोट प्रमोट प्रमोट, फोकस ऑन क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ द पॉडकास्ट एंड फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ कंटेंट। अगर ये है, और तीसरी बात कि अगर हम वैसे टॉपिक्स को एड्रेस कर रहे हैं जो टॉपिक अभी रिसेंट है और जो अभी बर्निंग टॉपिक है, तो ऑब्वियसली हमें व्यूज मिलेगा ही, क्योंकि लोग तो सर्च करते हैं टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, और एक अच्छी बात ये है कि आज के डेट में कोई भी प्लेटफॉर्म जो है, अगर हम स्पॉटिफाई की बात करें या यूट्यूब की बात करें या एप्पल पॉडकास्ट की बात करें, तो जब हम वहाँ पे कुछ भी सर्च करते हैं, तो एक बहुत ही अच्छी बात ये है कि कोई भी प्लेटफॉर्म ये नहीं देखता है कि हमारा पॉडकास्ट नया है कि पुराना है, हमारे कितने ऑडियंस है, इसको नहीं देखता है, क्योंकि सर्च रिजल्ट्स में वो हमेशा फोकस करते हैं क्वालिटी। तो वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे सौरभ ने थंबनेल की बात, ठीक है, कि हमारा थंबनेल कैसा है। तो थंबनेल तो वहाँ पे काम आएगा जहाँ पे कि ऑडियंस देख रहा है। बट अगर हम सर्च कर रहे हैं सिंपली, तो वहाँ पे जो हमारा एक थंबनेल होता है, बट व्हाट डिटेल्स वी आर प्रोवाइडिंग, हमारा टाइटल क्या है, हमने जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया है वो क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है क्लिक थ्रू रेट्स। कि अगर हमारा पॉडकास्ट अपीयर हुआ सर्च में, तो उसको लोग क्लिक करें, उसके लिए हम उनको कंपेलिंग डिटेल्स वहाँ पे देना। मैं क्लिकबेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लिकबेट्स हमेशा काम नहीं करता। क्लिकबेट्स तब काम करता है जब आपको अपने कंपटीशन को बीट करना है। ठीक है? अगर आपको स्टैब्लिश होना है, तो आप क्लिकबेट से स्टैब्लिश नहीं हो सकते, आपको कंटेंट की क्वालिटी पे काम करना है। दैट इज वन थिंग। दूसरा, जो इन्फ्लुएंसर्स के साथ एसोसिएशन की बात हो गई, मैं उसके ऊपर ये सजेस्ट करूंगा कि ये मैटर नहीं करता कि किसके कितने फॉलोअर्स हैं। ठीक है, मैटर ये करता है कि आपका टॉपिक कितना ज्यादा रिलेवेंट है उनके ऑडियंस के लिए, या उनका जो विजन है, उनका जो फैन फॉलोइंग है उससे। ठीक है, जैसे अगर जैसे सौरभ ने एग्जाम्पल दिया फिटनेस का, ठीक है, अगर हम फिटनेस कोच बनना चाह रहे हैं और हम चाहें कि शिल्पा शेट्टी को पॉडकास्ट पे इनवाइट करें, तो ये प्रैक्टिकल नहीं, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। वी हैव टू स्टार्ट स्मॉल। ठीक है, जो हमारे लोकल कम्युनिटी में जो एक्सपर्ट्स हैं, जो फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स हैं, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स हैं, या कोई सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनको रीच आउट कर सकते हैं बिगिनिंग में। क्यों? क्योंकि उससे हमारा जो कंटेंट है उसमें क्वालिटी आएगी, और हमारे कंटेंट में जो क्वालिटी आएगी, हमारा थोड़ा बेस बनेगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास 100,000 सब्सक्राइबर्स हो गए या लिसनर्स हो गए, तो हम किसी मिलियन वाले को रीच आउट कर सकते हैं। हमारे 10 सब्सक्राइबर हैं तो मिलियन वाले रीच आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट ब्रांड्स फेस इन द इनिशियल, और उनको ओवरकम करने का यही तरीका है, क्वालिटी पे फोकस करना, कंटेंट पे फोकस करना, एंड प्रमोट प्रमोट। ऑल्सो इसमें एक और चीज़ है कि जैसे सौरभ ने स्टार्ट में बताया था कि जब हम स्टार्ट करेंगे तो जब हम पॉडकास्टिंग स्टार्ट करेंगे तो तभी से हम लोग को जितनी बार करेंगे उतनी बार हमें नई चीज़ें पता चलती जाएगी और यस। हमारी कुछ मिस्टेक्स हुई रहेगी। फॉर एग्जांपल हमने पुअर क्वालिटी का माइक यूज़ किया है, वापस उसको देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि अच्छा हमें इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो जब तक करेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक तो ये भी है ना कि सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि परफेक्शन इज नॉट समथिंग दैट यू कैन अचीव इन वन डे, इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस। तो आपको कॉन्स्टेंटली करते रहना होता है, देन यू कैन बिकम। मैंने ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट में ये किया है। जैसे आज ही मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उस पॉडकास्ट में बहुत ही फेमस, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं किसी को डिफेम नहीं करना चाहता, बिकॉज आई लव देम। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने एक एक जगह पे उनको मेंशन करना था, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ठीक है, वहां उन्होंने कहा अमेरिका के प्रधानमंत्री। ठीक है, और उस पॉडकास्ट के मोर देन 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है,
और जो वहाँ पे उसमें ढेर सारे अलग-अलग एपिसोड्स होते हैं। उसमें उस एपिसोड का जो प्रेज़ेंटर है, वो खुद ही बहुत नॉलेजेबल है, ब्रिलियंट जर्नलिस्ट, बट ही सिर्फ अमेरिका के प्रधानमंत्री, ठीक, अमेरिका के प्रधानमंत्री नहीं होता। और वो कोई नया प्रेज़ेंटर नहीं, वो नया कोई पॉडकास्ट नहीं। बट मिस्टेक्स होती है, ठीक है? बट मिस्टेक्स को आप एक्नॉलेज करें, ठीक है? अपने अगले पॉडकास्ट में उसको ऑडियंस को बता दें कि हाँ, हमारे लास्ट पॉडकास्ट में हमने ऐसा मेंशन किया था, तो वो उसका सही ये है, ठीक है? तो अगर हम कोई मिस्टेक करते हैं तो उसको एक्नॉलेज भी करें, नो बिग डील। तो दैट्स इट। ऑल्सो पॉडकास्ट में अगर आप कोई मिस्टेक कर भी रहे हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब पोस्ट प्रोडक्शन होगा वीडियोस का तब आप उसको निकाल सकते हैं और आप सिर्फ क्रिस्पी पार्ट को रख सकते हैं। एग्ज़ैक्टली, बट मैं जो एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, वो पोस्ट प्रोडक्शन के बाद की बात है, क्योंकि आई वाज़ वाचिंग दैट ऑन यूट्यूब, ठीक है? और उसके ऑलरेडी मेरे ख्याल से 4 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके थे। 3 दिन पहले का पोस्ट था, 3 दिन में 4 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ थे। वहाँ पे मिस्टेक था, अमेरिका के प्रधानमंत्री, ठीक है? ओके, so I guess we are 6 minutes over the Hmm. given time, but there is one thing I would like to take one more question from the audience. Okay. इसमें the question is from Manoj. How can brands effectively leverage podcasting to build a loyal audience? And what are some strategies to ensure their podcast content aligns with their overall brand identity? That's a brilliant question. Thank you, Manoj, for giving us some brainstorming. Okay, some of the audience जो कि इस बात को लेकर के फोकस है कि ब्रांड आइडेंटिटी कैसे क्रिएट करें, ठीक है? तो यहाँ पे मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि किसी भी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए हमें एक इंडिविजुअल को फोकस करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे आज के डेट में अगर हम, जैसे मैंने एग्जांपल में दिया था बाबा रामदेव का, ठीक है? तो पतंजलि के नाम से हो सकता है कि 100 लोगों से आप पूछें तो 100 लोगों को पतंजलि ब्रांड नहीं पता हो, ठीक है? 100 में से 10 को पता हो, लेकिन अगर बाबा रामदेव का नाम लेंगे तो बाबा रामदेव का नाम सबको पता है, ठीक है? तो इट इज वेरी इजी कि जो प्राइमरी स्ट्रेटजी है हमारा कि हम अपने ब्रांड आइडेंटिटी से अपने कंटेंट को कैसे अलाइन करें, उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि उस ब्रांड से किसी एक पर्सन को हम उस पर्टिकुलर कंटेंट सेगमेंट में एज ए थॉट लीडर एस्टैब्लिश करें, क्योंकि थॉट लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अगर एक ब्रांड है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक ब्रांड है जो कि स्टार्टअप इंडस्ट्री की बात करते हैं कि अगर एक ब्रांड जो है वो इस बात पे फोकस कर रहा है कि हम एक स्टार्टअप को वो सब कुछ प्रोवाइड करेंगे जो उस स्टार्टअप के सक्सेसफुल होने के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है? तो उसमें क्या है कि उसमें हमें एक उस ब्रांड में कोई ऐसा पर्सन होगा जो लीडिंग इन्वेस्टर्स होंगे या फिर वो थॉट लीडर होंगे उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, तो वी कैन focus them or focus the brand and do that person, establish that person as a thought leader in that particular segment, और वो कंटेंट ऑब्वियसली वही कंटेंट होगा जो कि स्टार्टअप्स के इंटरेस्ट का है, ठीक है? एक स्टार्टअप के इंटरेस्ट का सबसे बड़ा ये क्या होता है, उनको पैसे कहाँ से मिले, इन्वेस्टमेंट कहाँ से, दूसरा उनको नए कस्टमर्स कहाँ से मिले, उनका जो गो टू मार्केट स्ट्रेटजी है वो कैसा हो जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर मिले, वो ट्रैक्शन गेन कर पाए, जिससे कि उनको इन्वेस्टर के सामने खुद को प्रेजेंट करने में आसानी हो। तो दिस इज आई थिंक फर्स्ट एंड द लास्ट स्ट्रेटजी दैट आई वुड सजेस्ट कि किसी भी ब्रांड को अगर अपने आप को एस्टैब्लिश करना है, ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, लॉयल ऑडियंस क्रिएट करना है और अपने पर्टिकुलर कंटेंट सेगमेंट में थॉट लीडरशिप डेवलप करना है, तो किसी इंडिविजुअल को उस ब्रांड से एसोसिएट करना है। दैट इज द प्राइमरी। सो आई थिंक हमने
काफ़ी सारे चीज़ें आधे घंटे में कवर कर लिए, फ्रॉम कि पॉडकास्टिंग का प्रोसेस कैसा क्या होता है, उसका स्ट्रैटेजी कंटेंट स्ट्रैटेजी क्या होता है और कैसे इक्विपमेंट्स यूज़ करें और ब्रांड्स क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करती है और उसे ओवरकम कैसे कर सकती है। ये सारी चीज़ें हमने आई थिंक आधे घंटे में काफ़ी क्रिस्प रखा और काफ़ी अच्छे से आप दोनों ने एक्सप्लेन किया। And with this, we come to an end of our today's episode. And thank you everyone for joining, and see you next time. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank